What if I told you you can literally eat fire? Yes, literally. In India, pan is a huge culinary darling that's been around for centuries. It's a snack usually eaten after a meal to help with digestion. It consists of a betel leaf that's wrapped around all kinds of different fillings, like nuts, fennel, cardamom, fruits, chocolate, or even meat. You can find it anywhere, but a small street food shack in New Delhi is sparking a revolution. मेरा नाम ब्रिजनंदन सिंह है। हम लोग यूपी गोरखपुर से हैं। ये तो शुरू हुआ था 1950 से पहले। हमारे दादाजी यहाँ पे पहले शॉप लगाते थे। इस समय मेरे पास पान में फ्लेवर मीठा पान हो गया, सादा पान, चॉकलेट पान, बटर स्कॉच पान, फ्रूटानेट पान, ब्लैक करंट पान, स्ट्रॉबेरी पान। उसमें जो आपको पसंद होगा अगले को वही फ्लेवर डाल के और एकदम पैक करके उसके मुंह में डालेंगे। All right then, but back to the revolution he's sparking. Recently, he had an idea that would reignite the classic Indian snack his shack was famous for. स्टार्टिंग में शुरू तो मतलब यहीं पे लौंग में लगा के हम लोग करते थे। उसी पे आग लगाए तो जल गया और इसका क्रेज इतना तेज हो गया कि जो है लोग इसको जो है फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे डालने लगे। इसकी वजह से इसका क्रेज दिन पर दिन बढ़ता गया। I have a burning question for you. Is it safe to eat? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये खाने वाला चीज़ है। फायर पान का टेस्ट हल्का सा कड़वा होता है, जलने की वजह से 200-250 बंदे आके खा लेते हैं। हाँ, फिर दोबारा वो भी आते हैं और साथ में मान लीजिए कि आपने आके खा के गए, अपने पड़ोस या साथी को भी लेके आए, चल तुझे फायर पान खिला रहा हूँ। तो पहले तो मतलब कम खाते भी थे, डरते थे ज़्यादा, लेकिन अब इतना इसका क्रेज बढ़ गया, अब डर किसी के मन में है नहीं। You're really bringing on the heat. Okay, that was a slow burner. I was just warming up. Okay, we've already burned too much time. सबसे ज़्यादा फायर पानी लोग खाने आते हैं। दादाजी ने जो काम किया था उसका आज जो रिजल्ट है, आज उसका गर्व तो हम लोग करते ही हैं। इतना बड़ा काम अगर न्यू डाल दिए हैं, इस चीज़ का गर्व तो हमें है और हमेशा रहेगा। So there you have it, India's hottest trend.